हेलो पीपल, नमस्ते। मुझे ऐसे काफ़ी रिक्वेस्ट आते थे क्रीचर रिलेटेड एंड सम बर्फ़ में कोई राक्षस जैसे रहते हैं उनके बारे में भी मुझे बोला गया था कि कम रिएक्ट करो एंड आई रियली डोंट नो, तो शायद वो भी मैं देखूँगा। तो मुझे लिंक बताना अगर ऐसा कुछ है। और हाँ, रिक्वेस्ट आपको जो देना है आप कमेंट सेक्शन में देते रहिए, आता रहूँगा। बस रिक्वेस्ट भेजते रहो, मैं देखते रहूँगा कौन से कलेक्शन सबसे टॉप में आते हैं, उन्हीं को मैं एक पहले करूँगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सब रिएक्ट करूँगा। जैसे ये वीडियो भी आ रहा है, मतलब जो कर रहा हूँ, तो है जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वो लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। 1, 2 and From the massive one-horned rhinoceros to the spider that lives far up in the Himalayas, here are 12 rare animals of Nepal. Number 12. The Red Panda. Nepal is a landlocked country in Central Asia on the Himalayas between China and India. For being only the 93rd largest country in the world, this area has an extremely unique wildlife due to varying climates and terrains. One of the most unique animals found here is known as the Red Panda. It's about the size of a domestic cat and looks quite cuddly. It's believed that only less than 10,000 red pandas still exist in the western foothills of Nepal and China. Despite the name, this animal is not a part of the panda family and is classified in the bear and raccoon families. Number 11. The Great Hornbill. Go ahead and take one look at this bird and take a guess where it's from. If you said Nepal, good job. They also live in parts of Southeast Asia such as Thailand, Vietnam, and Indonesia, but they also can make their way up north and into Nepal. The hornbill is a majestic animal that displays quite a few different bright colors on their feathers and beak. The most prominent feature that this animal displays is that massive forehead. Or should we call it a 5-head? Unfortunately, the number of these birds are beginning to dwindle due to hunting in some areas, especially in Cambodia. In Nepal, they're considered to be the king of the forest. Number 10. Asiatic rock python. This snake is most commonly found in India, but they can still slither their way into Nepal as well. They can be found in a number of different habitats, including forests, jungles, swamps, and marshes, to name a few. This type of python is an extremely effective swimmer, and they can grow about 9 feet long. They're generally friendly towards humans and don't exhibit too much aggressive behavior. These strict carnivores only survive off of meat and will feast on anything from birds, other reptiles, and most commonly mammals. This photo here shows it swallowing a baby deer head first. Some can lay up to 100 eggs, but despite their exceptional reproductive capabilities, the Asiatic rock python is classified as a near-threatened species. Number 9. The One Horde Rhinoceros. Unless you played the video game Far Cry 4, you might be a little bit surprised that there's actually a rhino here in Nepal. This is an extremely rare animal, but they're still found occasionally roaming around the less mountainous areas of southern Nepal and northern India. Its obvious main feature is its short and stubby horn in comparison to the longer horn of the African rhino. It prefers living in wet grasslands where it can enjoy grazing and feasting on wild fruits. Their population was on the brink of extinction at one point, and the Nepalese government ordered a national park be established in 1970 to protect them. The border of the park is surrounded by armed guards to keep an eye out for illegal poachers who are looking to sell their horns. Since then, the population of the one-horned rhino has reached about 3,555. Number 8. The Clouded Leopard. This rare, wild, and beautiful cat is found roaming around the foothills of the Himalayas in western Nepal, and their numbers are beginning to dwindle. These are some of the most talented cats when it comes to climbing trees and can basically scale tall vertical tree trunks with ease. The color of their fur makes them blend in quite easily with trees and foliage as well. These creatures are nocturnal hunters, and they spend most of the time sleeping in trees, kinda like your house cat. They were actually thought to be extinct in Nepal for a long period of time, but conservation efforts have been made to keep this wild, unique cat in existence. Many of the bans are poorly enforced, however, in some countries of Asia. Number 7. Himalayan brown bear. The Himalayan brown bear is the largest species of mammal in Nepal, and they can reach an estimated 7 feet tall, while the females are quite smaller. These bears will eat just about anything, plants or meat, making them quite omnivorous. This type of bear has become critically endangered, with the majority of them being found in Pakistan and northern Nepal. These bears have become a nuisance to many, and many shepherds were found hunting these animals to protect their livestock. Many believe that the myth of the Yeti was due to sightings of these brown bears up in the mountains. You can maybe see how this would be plausible, especially when it's covered in snow, but it could be difficult to explain the ape-like footprints many have reported seeing. Number 6. The Himalayan monal.
The Himalayan monal is a beautifully colored pheasant, which is actually the national bird of Nepal. This relatively large bird can weigh over 2.5 pounds on average and is notable for its green, red, blue, and even orange coloring. This is found from the mountains of Afghanistan all the way to Nepal. The Himalayan monal is under threat from quite a few factors, including poachers and the development of hydroelectric power, which disturbs their water source. The feathers used to be popular features in men's hats throughout the Himalayas. However, hunting them has been banned, making the hats illegal. Here we see 2 preserved spotted eggs from the birds being held at a museum. Number 5. The Himalayan tahr. This is a rare, huge mountain goat that's found in the rocky, mid-range elevations in the mountainous regions of Nepal. This species of mammal has a fairly small head in proportion to its body. This tahr here, photographed in Nepal, almost has a mane similar to a lion, and you can tell how thick its fur can get. The numbers of this species of mountain goat is also dwindling, and they're found in a thin strip of land like you see in this map. But they're also apparently let into the wild in New Mexico, here in the US. They've actually become a fairly successful invasive species, and places like New Zealand almost seem to be a better environment for them in some ways. Hunters are able to get permits to hunt them, and they're a little bit more rare in their natural environment, strangely enough. Number 4. The snow leopard. Snow leopards cover a fairly large habitat, but their numbers are few and far between. Also found in Kazakhstan, Mongolia, Kyrgyzstan, Tibet, and Siberia. This map we see here shows the natural habitat of the snow leopards, but it's estimated that there's only 2,500 still remaining in the wild. These guys are only slightly smaller than other big cats like lions or tigers. Snow leopards are quick and agile predators, and here we see one of them that hunted a Himalayan marmot for a healthy snack. They have tremendous power when it comes to jumping. They're able to leap 50 feet in some cases. They're beginning to slowly disappear, however, due to Chinese traditional medicine, their pelts, and because of environmental factors. Number 3. The Himalayan jumping spider. Apart from all the amazing mammals Nepal is home to, they also have some creepy spiders. You might think it's fun to walk around the Himalayas, but this small rare spider is known to lurk in mountain crevices, and they spring out when you least expect it to. This lives far up in the Himalayas at peaks over 20,000 feet high on Mount Everest, and they can withstand the extreme altitudes just fine. The only real source of food these guys are able to eat are the stray insects that get blown up into the Himalayas. They don't get the name jumping spider for nothing, and they can leap about 50 times their own height. They also have extremely good vision, about as strong as a human, and supreme muscular strength. Just be glad these aren't dangerous to humans. Some consider these spiders to be the ultimate survivors. Number 2. The Gauriel. This rare fish-eating crocodile with an extremely skinny jaw is considered to be critically endangered, and there could only be about 235 of them left in the wild. These naturally inhabited northern parts of India as well as parts of southern Nepal. They obviously prefer more marshy areas, but unfortunately, many have tried to keep these as pets. Their thin jaws are basically a prehistoric evolutionary adaptation for them to be more efficient in hunting fish. Male Gauriels can reach sizes of up to 20 feet long. Gauriels tend to have similar DNA to many dinosaurs from the Cretaceous period, and it's still kind of a miracle these things aren't completely extinct yet. Number 1. The Asiatic Elephant. The wide variety of animals in Nepal is quite amazing, and they got the elephants to prove it. Elephants are almost a part of daily life in Nepal, and even locals use them to get around sometimes. Elephant tourism has gained popularity in Nepal, and many will come to this country to be able to get an up-close look at these majestic animals. The number of elephants in the wild in this country are extremely low, and there's only an estimated 100 to 170 left. The government has seen the importance of these animals, not only for tourism, but also for environmental reasons. Considering how close Nepal is to China and how elephant tusks are sought after for Chinese medicine, protecting these rare animals may be difficult. Cute animals were there in this video list, और सब वीडियो में बहुत अच्छे animals. मैं हूँ animal lover, तो yeah, I really love them. बस मकड़ी छोड़ के, मकड़ी बहुत स्कैरी बहुत ज़्यादा स्कैरी थी. और जहाँ तक पहला वाला था, मतलब जो टॉप 10 में से लास्ट से शुरू हुआ था, व्हाट यू कॉल रेड पांडा, तो वो रेड पांडा जो है वो मुझे इतना पता है कि लाइक चाइना में होता है मोस्टली पांडास, फिर अब इंडिया में भी होते हैं और नेपाल में भी पाए जाते हैं. और इट्स जब आपको याद होगा जंगल बुक स्टोरी देखते थे आप, कार्टून मोगली वाला, उसमें एक पप्पू था, अप्पू या पप्पू नाम से था, काफ़ी पॉपुलर था, दोनों दो बेस्ट अच्छे दोस्त थे, क्यूट था. दैट बर्ड, द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल. सीरियसली मैंने ऐसी बर्ड नहीं देखी कहीं पे भी. मतलब
इतना बड़ा चोंच, नाक का हेड, मतलब जो साइज था काफ़ी ब्रॉड था। और वो खाते क्या होंगे, फ्रूट्स ही तो खाते होंगे, फल फूल जो छोटे छोटे जो लगते हैं वो दिखा रखा था। स्नेक की बात करेंगे तो स्नेक तो अजगर की जो बात थी, तो वो अजगर हमारे इधर भी पाए जाते हैं, मतलब ओवरऑल सब जगह होते हैं ये। और मैंने ये आंखों से खुद देखा जब मैं बहुत छोटा था। वी वर इन आर्मी क्वार्टर्स, तो वहाँ पे बहुत बंच ऑफ वो घासें थी, तो उधर पे मैंने क्रिकेट खेल रहे थे हम लोग, तो उस समय बॉल चले गई, तो मैं उस साइड गया तो मैंने देखा एक बिल्ली उछल रही है। और बिल्ली उछलता हुआ मैंने ध्यान से देखा कि एक लाइक प्रिंटेड अजगर प्रिंट होते हैं ना वो, मतलब दैट ब्राउन ब्राउन प्रिंट वो दिख रहा था चाहते हुए। और इतना ब्रॉड था, इतना मेरे मतलब मुंह होगा ना मेरा, अब तुम्हारा मुंह तो कैसा, मेरा मुंह तो बड़ा ही है, इतना बड़ा, तो मुंह ही इतना बड़ा, लंबा, मतलब थिकनेस में वो बहुत डेंजर था। मैं वो देखे, और मैं पता है तुम्हें ये पता नहीं कि मैं जब गया और सडनली वापस आया तो देखा तो सांप गायब हो गया था। अगर बात की राइनोसोर की, तो राइनोसोरस हाँ नेपाल का चितवन का बहुत पॉपुलर है, जिसमें रिएक्ट किया था। भैया इतने एंजॉयमेंट के साथ वो घूम रहे थे स्ट्रीट में एंड टेकिंग केयर ऑफ राइनोसोर्स, इट्स ग्रेट। मतलब बहुत खतरनाक होते हैं ये, फिर भी एज अ पेट दिख रहे थे मुझे। और पेट नहीं, मतलब कैटल्स कैसे होते हैं, भैंस गाय घूमने वाले टाइप, उस तरीके से घूम रहे थे। चीता वगैरह की बात करें, नॉट चीता, लेपर्ड्स के, स्नो लेपर्ड हो गया, और हिमालयन लेपर्ड जो शॉर्ट हाइट का था, वो उनको देख रहा था तो मेरे को अपनी कैट्स नजर आ रही थी। और आई एम बिग कैट लवर, तो यार बहुत क्यूट लग रहे थे यार, बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड द प्रिंट एक है, मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, कोई सेल कर रहा था, समथिंग कितना का था वो, अराउंड 3 लाख 2 लाख 3 लाख का आ रहा था। अफ्रीकन कैट सेम प्रिंट का था। मतलब ये रख लो, नहीं इतना भी कैट लवर नहीं है। भालू की बात करें, भालू बहुत सही था। इंडिया के भालू, अब जैसे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इंडिया के भालू इतने, मतलब बेचारे क्या हालत होती है उनकी एकदम। राजस्थान में ऐसी जगह में पाया जाता है, पहाड़ी एरिया में या नॉर्थ साइड में, या राजस्थान का स्पेशली, तो मतलब कितने चिमड़े से एकदम। भाई ये भालू मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूजी था। मतलब हमने एक बेयर वाली मूवीज देखी थी, वो सेम वही था यार। हैंड रिलेटेड बात करेंगे, द बर्ड, वो कलरफुल एकदम मोर जैसी लगी थी, पूरा फीचर पूरा मुर्गी का था वो, उसकी कलर अट्रैक्टिव था। बस मोर पंख पीछे हो जाता तो पूरी मोरनी हो जाती वो भी, है ना। घड़ियाल की बात करें, जैसे ग्लैडिएटर, पता नहीं क्या बोलते हैं, घड़ियाल ही है वैसे। तो घड़ियाल जो इंडिया में भी था, इंडिया में भी होता था, बहुत लोग शिकार कर रहे थे और बहुत पानी में ऐसा हो रहा था कि मर रहे थे। अभी कंट्रोल में आ चुका है। यहाँ पे भी हम महाराष्ट्र में भी हमारे आप विजिट, अगर पुणे या हमारा मुंबई जब महाराष्ट्र विजिट करते हो, स्नेक पार्क विजिट करना, गूगल भी चेक कर सकते हैं स्नेक पार्क, वहाँ आपका वेराइटीज़ ऑफ स्नेक्स है और बहुत सारे एनिमल है जो आप देख सकते हैं। वहाँ घड़ियाल भी है, मतलब ये। और इनको देखता था मैं पहले, मगरमच्छ का शेप एंड सन्नी नाक एकदम चिपड़ा सा हो जाता, चिपक जाता है, पिचका सा नाक हो जाता है, तो वो सब चीज़ देख के एकदम अलग सा लगता है। बट दे आर यूज एज अ पेट, जैसे उसमें बोला गया था, तो आई वाज सरप्राइज कि पेट की तरह यूज़ कर। स्नेक का तो ठीक है मैं मानता हूँ, स्पाइडर का भी आई थिंक लोग खरीदते। मेरे कॉलीग है और उसका फ्रेंड है, वो लोग कहीं जाके एक बॉक्स खरीद रहे थे। क्यों? वो ऑनलाइन या किधर से तो मकड़ी ऑर्डर कर रहे थे, बड़ी सी, क्या नाम था भगवान जाने। मैं तो बोला भयंकर, इसको देखे बगैर मैं कुछ भी पाल लूंगा, लेकिन मतलब मकड़ी में मैंटिस पाल लूंगा, लेकिन मकड़ी नहीं हो सकता मुझसे। मैं खुद से उठ के डर जाऊंगा उसको, अगर खुल गया और उसका गायब हो गया तो मैं तो सो ही नहीं पाऊंगा रात भर। एंड की बात करेंगे, एलिफेंट टॉप 10 में, मतलब टॉप 12 के जो नंबर 1 पे एलिफेंट दिया है। यहाँ पे भी होता है यूज़, लाइक कोई फेस्टिवल के लिए, कोई अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको लेके घूमते रहते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। और बेचारे जो चीज़ खुली रहनी चाहिए, जिनको आज़ादी जीनी चाहिए, उनको गुलाम बना के तुमसे कमा रहे हो यार, ये सब में भी बैन कर देना चाहिए। सबको अपना अधिकार देना चाहिए, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमाई है मानता हूँ, बट जरिया ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का यूज़ करके। और मैंने वीडियो आप देखना कहीं जगह में कि उनको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। समटाइम्स पीपल थिंक मैं जब मेरे जब लोग आते हैं बिल्ली के बेबीज लेने के लिए, तो उस समय कोई लोग बोलते हैं मत लो ये ब्रीड को, ट्रेनिंग बहुत बुरी तरह करते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं ये बोल देता हूँ भैया कहाँ टॉर्चर करते हैं, लेटर ट्रेन बोलते हैं। लेटर ट्रेन यानी कि पोटी ट्रेन करवाना पड़ता है, और उसके लिए क्या डंडे खींचूंगा? अच्छे से ट्रेंड होते हैं वो, खुद ही वो ब्रीड है अच्छी, तो वो अपने आप सीख जाते हैं। एंड थोड़ा बहुत डांटेंगे, अपने फैमिली को ही तो डांटते हैं, थोड़ा बहुत डांटते हैं, प्यार करते हैं, तभी तो वो अपने पास पढ़ते हैं। मेरी कैट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं और दे लव मी। और ऐसे तो मेरे को इतने जो एनिमल दिख रहे थे, इनमें से मेरे को ऐसा मिल जाता तो मैं तो उसको पाल लेता, बस जगह होना चाहिए उतना बड़ा और राइट्स होनी चाहिए पालने की। बट नेपाल में स्पीशीज़ बहुत स्वीट है, स्पेशली द राइनो, मतलब यहाँ पे भी है, बट
मुझे वहाँ का ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से केयर किया जाता है राइनो का। मैं उसको यूनिकॉर्न बोलता हूँ, वन सिंग नोज वाले को, हॉर्न को। एंड उस तरीके से। और इंडिया का तो मेरे को क्वेश्चन पूछा था किसी ने, इंडिया और नेपाल, सॉरी नॉट नेपाल, इंडिया और एशिया में, सॉरी इंडिया और अफ्रीका में डिफरेंट कैसे हो सकता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एलिफेंट में? तो मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा। बोले एक का कान फटा होता है और एक का कान स्ट्रेट होता है। जिसका कान कवर अच्छे से होता है वो अफ्रीकन होता है, जिसका कान में थोड़ा खराब मतलब फटे कान होते हैं ना, कट ईयर्स, तो वो इंडियन होते हैं, मतलब इंडियन एज एशियन होते हैं। मतलब अच्छा, तो वैसे ही होगा हॉर्न के रिलेटेड भी, गेंडे का भी यही होगा, 2 हॉर्न अफ्रीका के, 1 हॉर्न एशिया का, है ना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो कुछ लेकर आएंगे, मुझे रिक्वेस्ट भेजते रहिए। नमस्ते।